was singing Jaiye Sajna on stage. Everything was still in the room and मेरे हाथ जुड़ गए. There's me before that moment and there's me after that moment. वाव. वो जो वीडियो आया था जहाँ आप महाकाल के विग्रह के सामने खड़े थे, आपके दिमाग में क्या हो रहा था? I think मैं माफ़ी मांग रही थी. Because I've not been good all my life. And मुझे आपके और करण औजला की कोलैबोरेशन दिख रही है. ओह ओके, आई वांट कुछ न्यूज़ लीक हो गई है क्या यहाँ? पूरे जिंदगी में सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस क्या रहा आपके लिए? I remember Yaar Na Mile was one of the biggest hits in the world at the time, and I had lost my dad, and I think my whole family fell apart. We could never find an anchor again. When you don't have a safe place to run to, then ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ. And I did that for all my life. 2-3 ਸਾਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ, and I drank more than I should have, you know, and I regret it. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. I was so helpless. दुनिया में कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ आपको जगह देख के ऐसा लगा कि यही जगह प्यार है? जब मैं वृंदावन गई थी मुझे बहुत अच्छा लगा. प्रेमानंद जी महाराज said, say Radha. And when I said Radha, Radha, he said इतना ही काफी है तुम्हारे उद्धार के लिए. And those words are tattooed in my brain and I hold on to them like a trophy. My mom always used to tell me music is a good hobby to have. What else you going to do in life? मैंने उनको पूछा बस मुझे 6 महीने दे दो. If I make it, then I go this way. And if I don't, then I'll quit. Boom. Face of Indian music currently. बहुत ही ज़्यादा रॉ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कॉन्वर्सेशन है ये. दिस पॉडकास्ट फेल्ट लाइक थेरेपी वाली एक कॉन्वर्सेशन है ये. इट्स the music sensation, the number one streamed artist in India currently, Jasmine Sandler on Skill House brings you the रणवीर शो. इनकी तरह अगर आपको एक सुपरस्टार प्रोफेशनल बनना है तो सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, खुद की सेल्फ प्रेजेंटेशन पर काम करना सीखिए with the help of Skill House. But for now, this is Jasmine Sandler on Skill House brings you the रणवीर शो. पंजाबियाँ दी शान जैस्मिन सैंडलर आज हमारे साथ है. मैं कोई भी कॉर्नी स्टार्टिंग लाइन यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि आपकी वॉइस इतनी ज़्यादा रॉ है, इतनी ज़्यादा हीलिंग आप पास ऑन करते हो वॉइस के थ्रू. एक बहुत ही वायरल वीडियो था जहाँ रणवीर सिंह आपकी आवाज़ को सुन के वाह कह रहे हैं. अभी वो भी खुद एक आर्टिस्ट है. एक आर्टिस्ट पहचानता है दूसरे आर्टिस्ट की डेप्थ. तो पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग इन द स्टूडियो. Thank you so much. Thank you so much for having me. सेकेंडली, ये जो डेप्थ की बात मैंने कही, यहीं से स्टार्ट करते. इतनी डेप्थ आई कहाँ से? यार फील किया सब कुछ, जी के देखा है सब कुछ, और जो खुद जी लिया और उसको एक्सप्रेस कर दिया थ्रू म्यूज़िक और लिरिक्स, फिर वो एकदम से फील तो हो ही जाता ऑडियंस को. एंड आई थिंक द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट इज व्हेन आई वाज सिंगिंग जाइए सजना ऑन स्टेज जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो. I was completely present and I wasn't there at all. मुझे बहुत सारी मोमेंट्स याद आई मेरी लाइफ की जब जब मैंने प्रे किया था कि एक दिन मुझे सब प्यार करेंगे, मुझे सुनेंगे, मुझे पंजाबियों की शान कहेंगे, you know, and मेरे हाथ जुड़ गए. And I didn't say this on the mic. I'm not sure if the audience caught it. I said ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ कि तुसीं मैनू इन्ने सोहने दिन दिखाए. So that was that moment. There is me before that moment and there's me after that moment. Wow. Such a big moment on a personal level. बहुत ही वायरल वीडियो था वो, बहुत ही वायरल गाना था. जब गाना रिलीज़ हुआ मैंने शायद ऑन लूप कुछ 18-19 बार एक
साथ सुना वो गाना. I don't know, there's something in that song. Everything about it. You, Satinder Paji, वो जो end में jazz music आ जाता है. Oh my days. And Dhurandhar has made it 1,000 times bigger. Yeah. You know, sad गाने तो मैं कब से लिख रही हूँ, दिल की बातें तो मैं कब से कर रही हूँ, but Dhurandhar is such a massive milestone for us, you know, as fans of Hindi cinema. Yeah. कि हर चीज़ ही बहुत बड़ी दिख रही है और everybody won. पता नहीं ये सब कह रहे हैं कि नहीं, पर मुझे तो लग रहा है कि हम सब जीत गए. ये सब कह रहे हैं. सब कह रहे हैं. Honestly, 10 साल से ना कहीं एक बहुत ही आइकॉनिक हिंदी म्यूजिक एल्बम मिसिंग थी, एंड दैट गैप वाज फिल्ड बाय 2 एल्बम्स. तो आई थिंक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन एल्बम है ये इंडियन म्यूजिक के लिए और हिंदी फिल्म्स के लिए भी. सो यू बीन अ पार्ट ऑफ समथिंग, यू नो, दैट्स वंस इन अ डेकेड. I prayed for it. Not exactly this, but this feeling. And yet I can't believe it's real. And also यार एक बड़ा bliss feel हो रहा है. मुझे लगता था कि इतनी success feel करने के बाद, पूरी टीम के जीतने के बाद, I would be celebrating and like screaming on the rooftops and like, because ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁਰੰਧਰ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ 6-7 ਗਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ. Years of work, years of prayer, years of destiny also, ना. भाग्य भी होता है, especially artist के लिए बहुत ज़रूरी होता है भाग्य. I don't know how you feel about that. यार मैंने टैटू करवाया है इलेक्री, which is it is written, है ना. ये बड़ा पुराना टैटू है. जब मुझे I didn't know that we would be talking about it. भाग्य, Destiny. Yeah. I think at least मेरी ज़िंदगी में मैं, मेरी फैमिली काइंड ऑफ सर्वेंट्स ऑफ डेस्टिनी बन चुके हैं. बस काम करते रहो, बस आगे बढ़ो. आई गेस दैट्स द ओनली वे टू नेविगेट डेस्टिनी, बिकॉज डेस्टिनी रैंडम चीज़ होती है. मतलब ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना भी नहीं है. बट इन सेइंग ऑल दैट ना, इस हफ्ते 2 देवियाँ आई हैं हमारे स्टूडियो में. एक देवी यहाँ बैठी है, दूसरी देवी कल आई थी. हर नेम वाज गीता अम्मा, तमिलनाडु से है. वो कार्तिकेय की उपासक है, एंड शी कैरीज दैट एलिमेंट ऑफ कार्तिकेय, यू नो. वेरी इंटेंस, यू नो, स्पोक अ लॉट अबाउट शिवा, स्पोक अ लॉट अबाउट डेस्टिनी. उन्होंने बेसिकली कहा कि एक बार जब भगवान आपको अपना लेते, फिर आपकी डेस्टिनी इरेज हो जाती है, बट भगवान को आपको अपनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है. एंड क्योंकि भगवान हमसे बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, तो उनकी अटेंशन भी ग्रैब करने के लिए ना कभी कभी या तो संघर्ष का सामना करना होता है, या प्रेयर करना होता है, या बस खुद को इवॉल्व करना होता है. बट एक बार जब वो अपना लेते हैं, फिर आपकी डेस्टिनी भी नहीं रहती. वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, वही आपके मोमेंट्स, आपका जॉय, वो सब डिसाइड करता है. पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है. शायद आर्टिस्ट के लिए ये टाइम थोड़ा सा कम होता है, आई गेस, बिकॉज आर्ट के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा चैनलाइजिंग कर रहे हो, putting out bags of healing for the world, you know. I don't know, so don't mind the rant. That's very beautiful, most beautiful thing ever. I want to talk about so many things that you just said, right? Ke to impress God is the task of life. Yes. You know, and to pray so much and to be your best version, I'm imagining, is a few steps towards that, you know. And prayer is powerful. Prayer is so powerful. You know, ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ਸੀ, ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ. ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ I chose what resonated even more, you know. And while keeping what my mom has taught me, the prayer मेरी ज़िंदगी का almost daily हिस्सा है. मुझे लगता था मेरी आज की प्रेयर रह जाएगी, बट while I was getting my makeup done, मैं अपना माला जाप कर लिया. Wow, nice.
मेरे को लगा ये थोड़ा बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, बट एक जेन्यून सवाल है फ्रॉम माई एंड टू यू, क्योंकि मैं खुद महाकाल नहीं गया हूँ अब तक. वो जो वीडियो आया था जहाँ आप महाकाल के विग्रह के सामने खड़े थे, आपके दिमाग में क्या हो रहा था? I think मैं माफ़ी मांग रही थी. Because I've not been good all my life. And also I felt so tiny. I felt so happy feeling so tiny. And the last thing that was on my mind was कि इसकी वीडियो कभी आएगी. You know, मैंने तो mostly mask पहना हुआ था, but after some time it was suffocating me. I took the mask off and चुन्नी मैंने पहनी हुई है और पता नहीं किधर से वीडियो बनी. But it was a very intimate moment, you know, that I never thought I would get to see again. So I guess it's bittersweet that there's a video of that moment and I can see that and we can talk about it today. Powerful. I'd love to go again. It's such an honor that महाकाल as a deity chose you. I feel कि आपकी लाइफ बदल गई उस मोमेंट में. वही कहा जाता है उस मंदिर के बारे में स्पेशली, कि जेन्युइनली वो टाइम बदल सकता है आपका. यू नो, आप गए क्यों पर महाकाल? I had been wanting to go for maybe a year now, है ना? और we'll start with Vrindavan first. It was a voice in my head that said, Vrindavan कैसा है? And I had to go see. You know, I didn't even know that place existed. I had never been there. I thought it was a mythical, magical land in stories somewhere. Because the way I grew up, we talked about different things in the family. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ. ਐਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਜੈਨ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਜਾਵਾਂ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਓਕੇ ਗॉड्स ਪਲਾਨ, ਯੂ ਨੋ. ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ out of nowhere I was on a flight and I think I don't know how to explain, but I think ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, cracks ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਤਰੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ. So I think God uses certain people to show his glory. So then he makes them go through lots of character building things and lets the world see the downfalls. And then God shows his glory again and again and again. That's what life is. Especially जो शोहरत का कॉन्सेप्ट है, फेम की दुनिया में यही रिपीटेड पैटर्न रहता है. एक डाउनफॉल आएगा, उसके बाद आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद फिर एक डाउनफॉल, फिर सेलिब्रेशन. ये इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है ओवर द इयर्स कि फेम होता ही क्यों है किसी के लाइफ में. द आंसर आई हैव बॉइल्ड इट डाउन टू इज भगवान के पर्सपेक्टिव से वो खुद की ग्लोरी दर्शाना चाह रहे हैं उस इंसान के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल इवन 14-year-old like वैभव सूर्यवंशी getting early fame, God given talent, you know. Jasmine, same, God given talent, the glory in your voice. But उस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि फेम इज सपोज टू डिटैच यू फ्रॉम मटेरियलिज्म. फेम की जर्नी के बाद भी ये पता चलना चाहिए कि ये सब भी कुछ नहीं है. Goal is to move away. Eventually, I'm not there yet. क्यों? अभी तो बहुत सारा फेम चाहिए मुझे, बहुत सारी बातें करनी है, राइट. जब फेम मिलता है फिर सब प्यार करते हैं, जब प्यार करते हैं तो फिर वो सुनते हैं, जब सुनते हैं तो फिर बात करो ना, यू नो. अभी तो मुझे लगता है 1-2 साल तो मैं इस चीज़ को
और enjoy करना चाहूँगी the popularity and the fame and the acknowledgement and the adoration. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. You know, I just switched personalities just like that. नो इट्स गुड, इट्स गुड. आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो. जब मैं पढ़ाई कर रहा था इस एपिसोड के लिए, मैंने नोटिस करा कि जब आप रॉ फॉर्म में होते हो ना ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को भी अच्छा लगता है. हाँ. बिकॉज आजकल लोग पूरे गार्ड अप होके बात करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो एकदम खुल जाते हैं ऑडियंस के सामने. आप उनमें से एक हो. I'm guarded in Punjab, yaar. Can you believe that? I'm from Punjab and yet I'm the most guarded in Punjab. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ Really? ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, you know? But Bombay is my safe place. I love it here. Yeah? Huh. Why? I think Bombay is where I am who I always was, you know? And I think I couldn't explore that because Jalandhar vich, you know, I was what Mummy wanted me to be and my family and the neighbors and the society. And then going to New Jersey, California, I don't know what I was. I was transforming a lot and becoming a full person. And then coming back to India, especially Bombay, again and again and again, it has given me so much joy coming back to Bombay. आप क्यों लौट आए? आप इंग्लिश में भी सिंग कर सकते थे. Punjab needs me. I feel like जो मैं कर रही हूँ ना पंजाबी लैंग्वेज में, वो बहुत सारी लड़कियाँ, powerful women that I love and adore are already doing that in English. उधर हो रहा है ये सब जो इधर बहुत सालों से नहीं हो रहा. मतलब कहाँ हैं हमारे पंजाबी आइकॉन्स जो कि दिल की बातें करते हैं? कहाँ हैं हमारी women writers of India, female lyricists of India? You know, कहाँ हैं हमारी pop icons? Where is the Lana Del Rey of India? Where is the Adele, the Beyonce, the Rihanna, the Taylor Swift of India? Where is the Billie Eilish of India? Where? You think it's changing? It will. It is. Yeah. Gen Z artists are doing the thing now. हाँ ये. You know, grind कर रहे हैं. Yeah. Which is important. I feel that 20s is meant to just do a dry grind. यार जितना स्लो ग्राइंड होता है ना उतना ही खूबसूरत फ्यूचर होता है. जिसको अगर कुछ फटाफट मिल गया ना, फिर वो उसका कुछ और ही बन जाता है यार, उस इंसान का या फिर उस ड्रीम का. नहीं, इतनी ज़्यादा पावर जो होती है फेम की, दुनिया से प्यार वाली जो पावर होती है यार, उसके लिए एक जिगरा भी चाहिए, उसके लिए एक वास्ट स्पेस भी चाहिए, और ग्रेस, ओए होए होए, व्हाट अ रेयर थिंग, वो चाहिए. Where are you from? Family? हाँ जी. Amritsar. Okay. Oh yeah. See, that's the heart. Jalandhar, you know, Jalandhar, Amritsar is so close by. I was born in Ropar. It was called Ropar then, but it's called Roopnagar now. And Jalandhar is where everybody knows that I'm from Jalandhar because I was like 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ. ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਲਚਰਲ ਬਿਲੀਫ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਂ. प्यार कहाँ सीखा? ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਵੇ. ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਕੌਰ. Like literally? Literally, Oh, real wow. ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. Yes. Nice. So ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ. That's such a sweet name. ਸੱਚੀ. I don't know anybody in the world with that name. उनका नाम ही था प्यार. ਪਿਆਰ ਕੌਰ. ओए होए. Wow. ਹਾਂਜੀ. Wow. If I have a daughter, I'd love to name her प्यार. सच्ची, that's so beautiful, right? Yeah. Yeah. Wow. Okay, go on. I have names for my kids as well. But प्यार कौर is, you know, the name of my grandma, मेरी दादी. And मेरी दादी तो मैं प्यार सिक्ख्या, मैं अपने पेरेंट्स तो थोड़ा प्यार सिक्ख्या. जिद्दां मैं खुद प्यार करदी हाँ, मैं खुद तो बड़ा प्यार सिक्ख्या. तो प्यार संगीत के लिए पेट्रोल होता है या संगीत प्यार के लिए पेट्रोल होता है? Which one feeds which? I think प्यार फीड करदा है म्यूजिक नू, and even more than that, एक burning desire, a yearning to be something, to feel something. क्यों पर? यार ये शायद बड़े सालों से मेरे साथ है ये feeling, this yearning, this restlessness. I can't pinpoint exactly why I feel this way, but I've mostly been restless all my life. Underneath all the grace and patience and calmness, underneath I'm a restless little girl who wants to do something great, you know? And incomplete हाँ मैं बहुत
ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬਲਿਸਫੁਲ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਲਈ ਯਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ तो अब तक लाइफ में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? So many. Let's start from a recent one. Yeah. I bought my mom a home Oh wow. in Punjab. Oh wow. So ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ when I'm able to, I would love to buy my mom a home in Punjab again. So it feels like the biggest victory to me. Wow. Wow. Wholesome. Sachi. How does it leave you feeling? Like a winner. Like a good daughter, which I always wanted to be. Yeah. Yeah. Yeah, I think हर Indian बच्चे की dream होती है. No? As I've grown up, I've really realized that वो जो कभी खुशी कभी गम का एक डायलॉग है ना, it's all about loving your parents. Actually, that's true. So much trauma underneath all that. But yeah, Yes. but it is, yes. Yes, ma'am. Oh my God, that's true. Yeah. That's the point. वही ये बातें अक्सर शो पर हुई है about concept of aging parents. किसी को ज्ञान नहीं देना यार. All I want to say is that reality है. आपके parents बदलने नहीं वाले. So it's all about just giving them more love and support and years and time. What a thing I needed to hear today. I fight with my mom all the time. Same. But cute fights. हाँ, Not cute. not 15 मिनट वाली. हाँ. आना तो उधर ही है वापस. वही. Yeah. क्या करते आप अगर आर्टिस्ट नहीं होते? Okay. On a lighter note, I think I would be a teacher. Or like a housewife. A housewife who loves her children. I would have, if I wasn't an artist, I would already have kids that are like in 6th, 7th grade right now, Oh. Wow. I'll do that now, but I had to choose the path of obsession and passion and this burning desire of being where I am today. I think I'm like a year away from being my full potential as an expressive artist. मतलब अभी साल शुरू हुआ है, April चल रहा है, and I think throughout this whole year मैं अपने बहुत सारे musical dreams पूरे कर लूँगी और अगले साल मैं गायब. Wow. थोड़े टाइम के लिए. Detached. हाँ. शादी के लिए. Home. Settling down. हाँ. Nice. Good. है ना? That's a nice vibe. हाँ. No? Only when you have experienced fame do you understand the depth of settling down. Because at the end of the day, it's just family that matters. 100%. Because my ultimate dream on this planet is, along with being a loved artist, feeling deeply connected with earth angels all over the world, is to feel what it feels like to be a mother. I want to be a mother. Same. And it kind of feels like a sacrifice that I have been delaying my purpose on planet Earth, is to have a family. It feels kind of like a sacrifice, but also it feels kind of like a delayed blessing as well. Yeah. So let's look at it like that, Fame is not the end goal. That is the beginning of so much. Wow. Fame is the beginning of so much. Yeah. That's nice. ये तो step 1 है यार, इसके बाद तो बहुत कुछ करेंगे. यहाँ तो ये मेरी intuition है, यहाँ तो टीम ने मुझे ये बताया इसलिए it's in my head, but there's some kind of very intense rise I see for you very quickly. Starting with Jaiye Sajna. Sachi. Right? Sachi. Are you feeling that? Quietly, yeah. Like I feel no rush to release the next song. I felt rushed most of my life. And I think in the last
few years, I feel free. There's nothing in my way. And also, I love mom, love siblings, spend some time alone with my journals. I feel supported. I feel कि बहुत कुछ prove जो मैंने करना था audience को, the music world, वो पता नहीं कब से हो चुका है. My fan base started in 2008. Maybe it was one fan or 10 fans that joined my journey then, but वो मेरे साथ ही चल रहे हैं यार. अब तो मैं famous भी हो गई हूँ, popular भी हो गई हूँ. But ये जो soul family है मेरी, उनको नहीं फ़र्क पड़ा कि मेरा कौन सा गाना हिट है, कौन सा कम हिट है, कौन सा नोटिस भी नहीं हुआ. वो उन्होंने सब सुना है. उन्होंने सारी बातें सुनी मेरी, अच्छी बुरी, मेरे डाउनफॉल्स, मेरा राइज, फिर मेरे डाउनफॉल्स, फिर मेरा राइज. I just feel like asking you this, that's why I'm asking you, okay? जो आपने फैमिली की बात भी करी अभी, आई फील कि आपको कोई सुपर आशीर्वाद मिला है आपके पापा से, स्पेशली इस फेज में. Like in a culture how they say पितृs help. That's ancestors, right? Yes. I feel कि definitely आपको अभी भी बहुत ज़्यादा bless कर रहा है. Where do you think people go when they go? I think they're around. ये बात मैंने बहुत सारे लोगों से भी पूछी है. कहा जाता है कि 4 जनरेशन के लोग मेरे ख्याल से रह जाते हैं आसपास. कहाँ? कैसे उनके पास हो सकते हैं हम? ड्रीम्स में? या जो कहते हैं ना कि जैसे आप और गहराई में जाओगे स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके फिल्टर्स उतर जाते हैं. यू एबल टू ओपन अप फैकल्टीज. तो ऑन सम लेवल ड्रीम्स, आई डोंट नो, कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके ड्रीम्स वाले? Yeah, like last week I dreamt of my father and he said, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. And actually, it's just a building. It's just a house that's felt a lot of pain and a lot of experience and trauma. बहुत कुछ देखा उस घर ने. And I think my father wants us to move out of that house. And maybe it's a dream, maybe it's not. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? So that was my father a few weeks ago. And then my bibi, Pyar Kaur, a few years ago when I took charge of my life and I took accountability of everything that had happened. And I said, okay, I'm going to do great now. And I was surrounded by love and I dreamt of my bibi and my papa was there too. And she goes, Chalu shukar hai. Was it a dream? Was it for real? It's a mix of both. She said, Chal shukar hai. Yeah. But कहते हैं ना कि किसी इंसान की ज़िंदगी उनके चेहरे पे दिख जाती है थोड़े वक्त के बाद. जैसे कुछ बूढ़े लोग जब मिलते हैं ना, आपको उनसे पीस मिलता है. Yeah. और कुछ लोगों के लिए आपको बुरा लगता है. Yeah. क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी दिख जाती है चेहरे पे. I agree. I think even the elderly and also like us young people too, I feel like you can I have been wrong so many times in the past. Like I always see the good in people, but I feel like you can see kindness on someone's face. I feel like you can see empathy, compassion, purity, innocence. I mean, I look for that when I meet somebody, you know? And also some people just look evil, like and cruel. And they can't hide it. Unka wo dikh jata hai. Right? Yeah. I think also, audience is also getting very smart. Audiences can tell who. Finally. Yeah. But in saying that, from within the industry, I'm sure, you've also been in the industry now since 2008. So we know so many truths. And sometimes you do question कि एक बुरे इंसान को इतनी ज़्यादा सफलता कैसे मिल रही है? Because वो ना confidence बहुत है उनमें. कहते नहीं universe rewards those who believe in themselves. जिनको audacity होती है. So I believe that. I don't think it's fair that sometimes wrong people have the power, you know. But यार उनका confidence ही इतना है, उनको लगता है कि I deserve it. Yeah. I should have this. And empaths, on the other hand, they're always in self-doubt, kind of insecure sometimes,
And so sometimes they have low self-worth. So that's why जो सक्सेस एम्पैथ्स को मिलती है या फिर जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको मिलती है, कई बार लेट मिलती है. Yeah, you know, a younger version of me used to think कि इनको इतनी सफलता मिली है बट ये इंसान तो बुरे हैं, तो आगे जाकर इनको बहुत मुश्किलों का सामना भी करना होगा. एंड देन द ओल्डर वर्जन ऑफ मी थिंक्स कि यार अगर आप किसी के लिए भी थोड़ा भी बुरा सोच रहे हो ना, वो फिर आपका नेगेटिव कर्म है, तो किसी के लिए बुरा सोचो ही मत. और पता है क्या है, God has seen it all. Yeah. God, you can't pretend with God. अगर प्राइवेट में कुछ आप बुरा भी करते हो ना, तो फिर कई बार आपका पब्लिक में जुलूस निकलता है, बिकॉज आप बच नहीं सकते, सब इधर ही चुकाना पड़ेगा. Yeah. और अगर आप अच्छे इंसान हो, देन पहली बात तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे आपको अपने लोग मिल जाएंगे एंड दैट विल बी योर होम. Yeah, yeah. आपसे एक बहुत की सवाल पूछना है जो मेरे को एक्चुअली शुरुआत में ही पूछना चाहिए था. बट व्हाट्स अप इन योर लाइफ? Oh my God. लाइक कैसे हो? हाउ आर यू? व्हाट्स हैपनिंग? I feel victorious. जो मेरे म्यूज़िक में मुझे सक्सेस मिल रही है उससे भी ज़्यादा मुझे घर पे सक्सेस फील होती है. I feel at ease. I feel that my dreams just got bigger. I feel like I need a bigger home because I have too many clothes at the house. I miss my dogs in California. I pray for my siblings to be even more blissful than I feel in my life right now. As their elder sister. Burden of the elder sibling. I swear. मेरे छोटू उसको ठीक रहना चाहिए. Yes. Huh? Yes. How are you? Tell me everything about your life. How am I? मैं बस आर्टिस्टिकली बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे दिल को चाहिए. ग्रैटिट्यूड है दिल में. सामने से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का चांस मिल रहा है, तो आई थिंक पिछले 10 सालों में ये मेरा हैप्पीएस्ट पीरियड है ऑनेस्टली. शुक्र है. यू नो, सब्र और शुक्र. हाँ जी. सब्र सीख रहा हूँ, शुक्र सीखा. It's beautiful. That's a magnet on my fridge. या मैं बट कॉन्शियसली ना, पता है वो बचपन में जैसे हम जब पेंसिल के साथ लिखते थे तो आप इरेजर भी यूज़ करते थे, और जब आप पेन्स में ट्रांजिशन करते हो आप इरेजर नहीं यूज़ कर सकते, आप फिर स्क्रैच आउट करते हो. दैट वाज अ वेरी अनोइंग फीलिंग. मुझे वो इरेजर वाली फीलिंग अच्छी लगती थी. तो आई एम ट्राइंग टू इरेज आउट द एम्बिशन फ्रॉम माई हेड एंड जस्ट फोकस ऑन वन डे एट अ टाइम, एट द मोस्ट 1 month एट अ टाइम, क्योंकि मैंने देखा कि ज़िंदगी बहुत रैंडम है, यू नो, विच इज़ वाई डेस्टिनी. So that's where I am. Should we write in our journals together? Do you know? Matlab, what a great time it is to like write down something that nobody has to see. We'll meet next time and we'll share with each other कि क्या क्या हुआ. Yeah. ये कर सकते हैं at some point today, है ना? Yeah. Yeah. I write all the time. I pray in writing all the time. Pray in writing? हाँ जी, pray. मतलब? Dear God. Okay, wow. Dear God, I'm thankful for this. Dear God, I really want this in my life. Dear God, tell me what I have to do to experience this in my life. Dear God, I'm stressed about this. Dear God, help me heal from this, you know? So I pray in writing all the time, and prayer, imagining how the future can be so great. I write that all the time in my notebook. I think I might have maybe 250 notebooks. Oh wow. थोड़ी कैलिफोर्निया में पढ़ी हैं, थोड़ी बॉम्बे में, थोड़ी पंजाब में. ये कब स्टार्ट किया था? I think when I was very little, 8th grade. तो 8th grade वाले नोटबुक्स कभी पढ़ते हो? एक है. आप पढ़ते हो उसे? Maybe like 2-3 years ago when I went back to California, I read what I wrote in the notebook, and I made my father write something in there, my mother, my siblings. ये जो आपने मेरे को एक्चुअली शूट से पहले कहा कि जब आप पंजाब से अमेरिका गए थे, हाँ जी, और चोटियाँ बांध कर आप निकलते थे, yeah, इंग्लिश भी नहीं जानते थे तब, नहीं. क्या थी आपकी रियलिटी? We landed in New York. It was a massive, big world. I'd never even seen something like that, even maybe on TV even, you know. And it snowed the next day, I remember. We had never seen snow in real life, me and my younger siblings.
we didn't speak English. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ and we used to live in a one-bedroom apartment. It was 6 of us. Oh wow. Yeah. As in mom, dad? 3 of us siblings and then my grandma. Wow. आपके पापा क्या करते थे? ਸੋ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਇਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ law school valedictorian. But then when you go to America, either you can study for 3-4 years or longer, or you can take care of your family. So मेरे पापा ने अपनी सारी life sacrifice ਕੀਤੀ, right? ਸਾਰਾ ਰੁਤਬਾ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ status ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ I think his first job might have been at a gas station, pumping gas. I have a photo of my father. He's sitting in the snow and he doesn't have snowshoes on. Matlab, I can see his toes. And when I asked him one time, Papa, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ shoes ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ shoes ਮਹਿੰਗੇ ਸੀਗੇ. So he's completely sacrificed all his comforts and all the things that he might have wanted in his life ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ one bedroom ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, low income homes, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ you can give a food stamp to the grocery store and food is cheaper, so that kind of help we also received. And so this is us in 8th, 9th grade, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ jobs ਕੀਤੀਆਂ. She used to pick cherries in a factory, like mazdoor level work, got back into, when we moved to California a few years later, he got into the legal system again. He became an interpreter. So somebody in the court system, somebody who had committed a crime or done something bad, and he happened to be Punjabi. So my father was the interpreter who would interpret to the court and the judges and the lawyers ke this is what he's saying. It's good money, you just go translate, both languages. Te bahut paise milte ne, Te I used to interpret too for some time. Wow. वो जो पहले के 10-20 साल थे, आप रजिस्टर कर पा रहे थे खुद के दिमाग से? क्यों आपका हाई स्कूल हुआ रहेगा तब, राइट? I think family में यार इतना कुछ चल रहा था ना यार, मिन्नू ना it feels blurry who I was, what I wanted. From the age of 13, I mean, I'll say this with no emotion and I'll read it like a chapter in my life. From age 13 to like 18, 20, I have no idea what was happening in my life. Matlab parents da inna kuch chal raha si. We were struggling in more ways than one, and my mom will see this, so I won't say too much, but it was just a very difficult environment, We were struggling, and Papa raat nu job karde si, fir us svere sonde si, but we had a one bedroom. This was the smallest of our struggles, but we had to be quiet in the house or like be outside of the house because Papa needs rest, and they had their own thing going on, and like it was a lot in a small space, and we were adjusting to the new culture. So like I said, it was the smallest of our struggles, but we were as a family transitioning into being in America now, and ਇੱਥੇ comfortable ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, but transitioning to America was really difficult. Like it took us, I would say, 5-6 years to get on our feet. I mean, my parents, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਘਰ ਲਿਆ. So ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, so my father would always be concerned ਕਿ ਅਗਲੀ interpreting job ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਆਵੇਗਾ. ਫਿਰ my mother used to work as a teacher in India. She gave up her job, her life, her friends. We could never pay them back as children for the sacrifices they've made. And I don't know who it was more difficult for, us growing kids or grown-up parents who left everything to give us the life that they would hope would be better than theirs. Were you singing at this point? I was praying at the Gurdwara. Okay. Gurbani. Yeah, Shabad. Wow. Like on stage and stuff, like because ਉਦੋਂ like 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ who knows like ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਦਾ, where do I go and sing, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ music ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, but the only time I could sing was at the Gurdwara.
So I would sing shabads. Wow. Yeah. वहाँ से आपको ट्रेनिंग मिली है. हाँ. That's crazy. That's what's showing up in the music now. जाइए सजना, right? जो मैंने आपसे पहले पूछा कि डेप्थ कहाँ से, ये आंसर. with struggle, with प्यार. Yes. But seed तो ये है. Lots of prayer. Lots of prayer. You know, like I said, कि Wow. Jalandhar ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ pray ਕਰਦੇ ਸੀ. The realest thing we talked about today. Oh my God. I love it so much. But उससे रियाज भी हो जाता है ना. हाँ यार. और शब्द is very difficult to sing, right? Like ਉੱਚ ਰਾਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, but I know all about feelings, right? And when I'm singing, I'm feeling the thing as if it's the only truth I've ever known, right? So ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ ਸਜਣਾ feels like a prayer, you know? It just sounds like a prayer. And prayer has been a part of my life. And yeah, so being in California, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ I used to sing. And then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ auditioning, you know. ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡ ਆਈ ਸੀ. I must have been 15 or something, or 16 maybe. Auditions are happening in the small city of Stockton, you know. And ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਿੰਨੀ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ, you know. ਤੇ I went, and it was, everybody was American there, like, you know, white, black, Asian, Hispanic, and I was the only Punjabi girl there. And I wore a Punjabi suit. How brave of me. I'm 15, 16, and I sang a Punjabi song. And that was a big part of my journey that's a whole chapter that opened up, you know, conversations with record labels at a young age. I remember saying no to opportunities at such a young age because they were like, तुम 2 लाइनें गाओगी? And हमने इंग्लिश में कितनी बात की ना? नहीं ठीक है. It's okay. हाँ, दिल से बातें निकल. हाँ यार. So तुम 2 लाइनें गाओगी और ये rap verses होंगे और, and I was like, no, I don't want to just sing 2 lines. मतलब I am the whole thing. मुझे तो सारा गाना गाना है. I don't know where this confidence came from. I didn't even have a song released, you know. But मुझे याद है मैंने नो बोल दिया था. मैंने 2 लाइनें थोड़ा गाने आऊँगी मैं. मुझे और गाना है. मुझे पूरा गाना दो. या मुझे आधा गाना तो दो. You know. And these were record labels in America, Florida, New York. Yeah. Because एक ट्रेंड चला था ना. इंडियन लड़की हुक गा रही है और रैपर्स रैप कर रहे हैं. हाँ, ओके. वो तो मैंने नहीं करना था यार. मुझे हुक नहीं गानी यार. शमूर का गाना याद आ रहा है मुझे. Yeah, there's so many that come to mind. सचिंदा थाना. Yeah. सचिंदा. Okay. Wow. Cheers. Cheers. Cheers, Jazz. How many people call you Jazz? Maybe like 1 or 2. Oh, really? Shashwat calls me Jazz. Shashwatology Shashwat. Yeah. Ooh, he has ripped it apart. Dhurandhar and Dhurandhar the Revenge. Yeah. He is such a genius, a dear friend. And yes, I agree with everything you were just saying. Ke, what an album both times. क्यों, कहाँ से आया इतना जीनियस उनमें? I think the freedom to create what his intuition said to him. Aditya Dhar is a major reason he gave Shashwat all the freedom. He gave me all the freedom to write the songs. And it's been such a vast space where we could create those songs. मतलब अपनी मर्जी की है, mostly. अपनी दिल की बातें कर दी हैं हमने, mostly. Shashwat, he used to wake up whatever time, afternoon, evening, and then he would pray, and then he would sit on the piano and make a melody. Wow. That is his process. Morning routine. He would have this beautiful magical melody ready for me to fit the words in. Then he will tell me, this is the feeling. Either he'll tell me the scene in the movie, कि exactly ये हो रहा है, but बिल्कुल उसमें indulge नहीं करना. Step back 2 steps and then write a song about that emotion. Because we want more people to feel that feeling, you know, outside the film as well, right? And so he would tell me to indulge in it a little bit, and I would fit the words, take most of it from personal experience, some of it from imagination, and Shashwat and I can write a song in 15 minutes. Wow. Can we expect more music from Yes. this combo? Yes. You guys are working on something exciting? Not yet, because अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतर रहा. अभी तो वो एम्स्टरडैम में है, उसको तो छुट्टी चाहिए थी यार. He was a madman. Like he was almost as, मतलब था भी और था भी नहीं वहाँ पे.
That's how much nights blended into days. The whole team was on edge for the last few weeks. I mean, I've been in rooms, massive studios where there's like 50 people just in and out, in and out, in and out, editors and sound, and then the film, and then the team, and then so many people. They were circulating in a building just like this. बहुत सारा anxiety थी, बहुत सारा nervousness था, and Shashwat, under all that pressure, he created various masterpieces. Yeah, but there are some shades of Amit Trivedi, some shades of A.R. Rahman, some shades of Vishal Shekhar, Salim Suleiman, all these guys. We've finally got one more person in that same category. जो बहुत cutting edge music बना रहा है. Like, if you actually go into the music of Dhurandhar, it's very, very modern. It's very, very fresh. We've not heard music like this. That's why it worked. Yeah. And it's vintage at the same time. I mean, look at the melodies. Yeah. They feel like you've heard them before, but you haven't. And the music is so new. It's so 2025, 2026, So can you expect more music? Oh, yes. I am so honored to be in a room with Shashwat, and he plays a melody, I write the song, and boom, 15 minutes later, we have a Main Aur Tu, or we have a Rang De Lal, or Jaiye Sajna. वो शायद मेरा favorite song है, दोनों albums में से. Just this strangely eerie yet warm song, which is what the moment also is in the film. There's so many places we could have put that song. Even like, sometimes I feel like that could have been like, fans are editing the last scene of the film with Jaiye Sajna because they felt like that was appropriate then too. Jaiye Sajna, yaar, wo to mera to गाना रहा ही नहीं है, वो सबका हो गया यार. Best case scenario. Yeah. No? Did you end up meeting Arijit Singh? I never have. Never have? Never have. तो वो songs record कैसे करते हैं? वहाँ से, Bengal से? So, I'm not sure. The only time I've interacted with Arijit Singh is when it was 2014, Yaar Na Mile had just released, and he tweeted me. He said, "You have a powerful voice," or something like that. And I said, "Thank you so much. I'm happy to be in touch." जब Twitter में use करती थी, right? And that's the only time. I might have sent him a lot of love in the DMs, but us interacting, that was the only time. मेरे दिमाग में वही गुरबानी का सवाल फ्लैश हो रहा है. Yeah. I want to talk about that. Yeah. तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग हुई, वही आपका रियाज था. क्या चलता था आपके दिमाग में तब? My main thought was कि गलती ना हो जाए, because it's shabad. But I remember that was my only singing that I was doing at an early age. कभी-कभी like Punjab में जो मेरा school था, sometimes I would perform in competitions and participate in group singing performances. But मेरा prayer ही music था. And then life took a very beautiful turn into hip-hop and R&B. But आप पंजाबी म्यूजिक सुनते थे तब भी बचपन में? बचपन में सुरेंद्र कौर जी, जगजीत सिंह जी. बचपन में lots of Bollywood. Bollywood was everything, and the pop scene was epic, जाएंगे हम तो Bollywood, या फिर Made in India, या फिर तू कभी जानेगी. These are the songs. I-pop. है ना? यार, मतलब, it's about time. Yeah, it's coming back. है ना? Pop music is here to stay. Yes, oh please. Yeah. 90s kids know what I-pop felt like. Yeah. It was different. It was the most wholesome upbringing ever musically. And we used to, I used to cut out magazine photos of people that I loved, actresses and actors. Like hero, heroine ही थे तब, मतलब हमारे idols, Singers तो फिर भी, मतलब अब ज़्यादा recognition उनको मिल रही है, singers को, pop stars को. But तब तो hero, heroine ही थे हमारे, like, closet पे चिपके हुए, Speaking about this recognition of pop stars, मैं मेरे दिल की एक बात कहना चाहता हूँ. मुझे आपकी और करण औजला की एक कोलैबोरेशन दिख रही है. Ooh, okay. I won't say anything, but happy to see you smiling. कुछ न्यूज़ लीक हो गई है क्या? I don't know. कुछ तो करेंगे. दोनों बहुत ही ज़्यादा epic voices हैं, और artists हैं, और writers हैं. I love that he writes. Yeah, same is to be said for you.
an artist who actually writes. Like we talk about Kendrick Lamar. We have our own Kendrick Lamars in U2. So I'm waiting to see what happens. It'll be magical. We've spoken about it a few times, and, God's plan. But I think we need to make an album together. Ooh. Like, why not? We don't just have one song to sing together. We have an album that's long overdue, और सारी बात alignment की होती है, like he loves and appreciates me and I love and appreciate him. And it is really great for Punjabi music to have both of us create a song together or many more, ये बड़ा अच्छा रहेगा यार. जब हम बुड्ढे हो जाएंगे तो फिर कहेंगे ये भी किया था वो भी किया था, बट ऑडियंस को हमेशा याद रहता है यार. These are turning points. रियाज कर रहे हो अभी भी? Like singing? हाँ मतलब मैंने रियाज यार honestly knock on wood करो, मैंने रियाज कभी नहीं किया. बट द गुरुद्वारा सिंगिंग Yeah, life has been a riyaz. वो कर रहे हो? So I have a secret channel on YouTube where I pray. And secret in the sense that I don't promote it much or talk about it much because मेरा music world बहुत अलग दुनिया है और prayer एक बहुत अलग दुनिया है, मुझे लगता था. So it's called Sab Seva Sab Tera. And whenever I feel really, really happy or feel like really, really want to pray, I get in a studio and I pray. It's a 13-minute prayer always because tera tera, and I have 6 prayers on it. And kabhi it all started with Radharani, so I did it. I just pray. I don't know how to pray in a right way, but I've just prayed on bird sounds and water sounds. And so wo mera riyaz hai, So I have never done like jo riyaz jisko kehte hain, the for hours and hours doing sa re ga ma. I have never done that for a while. Maybe I did that in 4th grade and 5th grade. Wow. Yet your voice has been trained somehow. I think it's all the things that I've felt and everything that I've lived through and thrived through is it all that comes out in my voice, to be honest. I didn't always sound like this. My voice was half as powerful as it is now. मतलब जब मैंने शुरू किया था, maybe I used to sing like बहुत पतली और हल्की और delicate आवाज़ थी मेरी. अब पहाड़ जितनी है. Do you think आप अब situations को बस attract कर रहे हो खुद की life में? I think I'm allowing. Allowing, not attracting. हाँ. मैं खुद के रास्ते में बहुत थी यार. कैसे? ये चाहिए वो चाहिए जिंदगी ऐसे होनी चाहिए and all that stuff, and I was just I'm such a like I want things a certain way, like that's the Virgo in me, like ऐसा 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 पहले ऐदा फिर ऐदा. And I think I don't know when this transition happened slowly, but it's really helping me a lot is कि dear God, I surrender. Lead me where you need me. This सवेरे उठ के एक हल्की जी फीलिंग होती है कि do this. ये जो आपने अभी डिस्क्राइब करा है ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्जन्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जहाँ आप पूरी तरह से सरेंडर करते हो. बट सरेंडर करना सीखना होता है लाइफ में. इट्स नॉट सिंपल, एवरीवन कांट सरेंडर. एंड डोंट माइंड मी सेइंग दिस, क्योंकि मेरे भी प्रॉब्लम्स रहे हैं लाइफ में. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई हैव स्पोकन अबाउट अ लॉट. मैं बहुत स्मोक अप करता था कॉलेज में. आई थिंक मैं एक स्लेव टू द हर्ब था तब. वहाँ से खुद को छुड़ाकर मैं ग्रो हुआ हूँ लाइफ में, आई फील. क्योंकि मैंने वो हथकड़ियों को महसूस करा, इस वजह से आज मैं सरेंडर कर पाता हूँ. इट्स टेकन मी अ बिट ऑफ अ जर्नी. आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट योर ओन पैरेलल? If you're comfortable. Yeah, very comfortable. I think I would like to say कि ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, because इसका कोई हैप्पी एंडिंग है ही नहीं. किसी भी नशे का कोई हैप्पी एंडिंग है ही नहीं है. And like you said, it's slavery. Yeah. Do you want to live like a ghulam? I struggled a lot. It's a solution to the circumstance at times, to escape or to suppress or to feel more ambitious, like we were saying, right? Wow, no one talks about that. Anyway, go on. है ना? मतलब I think that growing up,
I have gone through certain phases of my life, childhood, and figuring myself out as a girl, as growing up as an adult woman, also as an artist, eldest daughter, child of immigrant parents, and Punjabi American. There's a lot that on my journey I've experienced that wasn't easy, that wasn't so comfortable, right? So sometimes, like, well, let's be real, like everything on one side and trauma from family on one side, So I think when you grow up in a household where, यार मम्मी ने देखनी इंटरव्यू मेरी, I know this feeling. है ना? But I think like मतलब life happens. life happens, and like parents are not emotionally regulated. They don't. It's a lot for them too, but then it's really a lot for the children growing up in that family. So I've been empathetic to the elders in my family, but यार हम तो फिर भी बच्चे ही थे ना यार. 12-13 साल दे बच्चे, 16-17 साल दे बच्चे, like we need guidance and protection and love and nurturing and encouragement. We need you to put your things aside and give us your all. It's also where the urge to become a parent comes from, I feel. For both you and for me as well. Same thing. The thing is वही कि I feel हमारे generation के लिए ये एक universal challenge है कि generational patterns कैसे break करें. Yes. कि जब हमारे खुद के बच्चे होंगे, we'll ensure that we're a little softer. Yes. Taking nothing away from parents क्योंकि वो hard थे इसलिए हम आज यहाँ हैं. We're talking about releasing hatkadis of addiction, all that. That also comes from a tough mindset. Tough mindset also came from their toughness. यार हमने तो ट्रॉमा एंड्योर किया ही किया. हमारे पेरेंट्स ने कितना किया है. हाँ वही. ये कभी सास भी कभी बहू थी. कितनी सासों ने बहुओं को टॉर्चर किया होगा कि अभी भी जो बहुएं हैं वो सास बन गई हैं और वो अपनी बहू को टॉर्चर कर रही हैं. यार ये क्या है, इसको रोको अभी. मतलब how many parents have been so tough on their children that then they are tough on their children. I mean, क्यों? Why? मैं भी बहुत शत्र खाते हैं. Like I swear, I used to get a whooping for everything. Everything, मैं बहुत शरारती भी हुंदी सी. मतलब the search for adventure, right? Like I used to like run around the streets and पंगे भी लेंदी सी मैं क्लास ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ. मतलब I was good kid, like good student, but ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, right? ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਫਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ, right? When did you have your first drink? I think, so I didn't used to drink, like 21 is the age in America, right? So I didn't drink until then. And then maybe 22, 23, maybe 23. Ooh. I refrained from it because there was drinking going on at my house. Like my father used to drink. And so like, there's two things that happen when you have a father that drinks. Either you're an alcoholic, or you're like, I cannot drink. It's the worst thing ever, right? So I did both. So first I did alcohol's bad. It's not good. It ruins things. And then so my friends were all drinking at age like 17, 18, right? Maga pani sharab pinde, right? And then when life really hits you, you look for some kind of you think it's a support, and I do regret some things that I chose to do in those 2-3 years. In India में हुआ था? Punjab, yeah. आप जब पंजाब लौटे थे? Yeah, basically like vibes that time, those 3-4 years, right? Like I think like बहुत कुछ इकट्ठा ही हो गया था, right? Like I was famous on one side, and then I was feeling certain things in my family dynamics break apart, and like papa nahi si, matlab success bahut sari mil rahi si, but then I drank more than I should have, and I regret it. But उस time ते मेरे लिए बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਲੈ, ਬਟ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ. किसी ने दिल तोड़ा था बचपन में पापा मम्मी ने, है ना, बार बार. unknowingly? हाँ, unknowingly always. But I have some resentments. I love my mother and I loved my father, but एक बच्चे का जब दिल टूटता है तो फिर वो यार फिर टूटा ही रहता ना.
को लगता है उस बचपन के टूटे हुए दिल की वजह से ये अल्कोहल वाला फेज हुआ बाद में? Yeah. When you don't have a safe place to run to, then ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ friend, ਸਭੀ ਮੇਰੇ friends, I love you all, love me, you know? And I did that for all my life. I was just yearning to rest and finding home, you know? And because I couldn't find home at home, I was just making anybody my home. अल्कोहल की वजह से क्या होता था आपके दिमाग में? It looked shandar on the outside. You know, expensive liquor, laughing people. बहुत सोहनी महफिल हुंदी सी मेरे आसपास, you know. बड़ा शोर हुंदा सी. There was always a time in that महफिल that I would be sitting by myself in the balcony, alone. Writing in my journal, writing a note in my phone, recording a voice note, talking to my dad. There was a lot of loneliness, you know, in that महफिल. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ. Mom used to reject me, you know. Family ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ because I was successful, but at the same time, like I wasn't that successful yet. It is hard to say I'm proud of you until the world is saying I'm proud of you, you know. So and I always wanted mom's validation, as beautiful as that is. I was going to say as silly. It's not silly. What does a child want? A child does want the parents to clap for them, you know. My mom was tough cookie, like tough love all the way, right? Always used to tell me, okay, theek hai. This is a good hobby to have. What else? What else you're going to do in life, you know? Besides music. My father too, you know. Okay, keep it as a side thing. Sing at the community shows. And you cannot make this a career. You are not a singer. You don't know anything about music. And you're wasting your time. I have a video on YouTube. I'm sending you a link. It's an interview I did with my mom and my dad in our kitchen. जब मतलब मेरा एक भी गाना हिट नहीं था, मैंने उनको पूछा बस मुझे 6 महीने दे दो. If I make it, then I go this way. And if I don't, then I'll quit. I didn't make it at that time, but I didn't quit. ये 2012 की बात है. Took 14 years. Yeah. Wow. 14 साल की मेहनत. And ups and downs. Yeah. Do you think कुछ बदला आपके भाग्य में addictions छोड़ने से? Oh, yeah. My mom really helped me in that. My family really helped me in that. They loved me through my rock bottoms, you know. And the biggest fight was the fight with myself. Matlab, every day you have a choice how the day and the night is going to go. And then you fall into old habits, you know. And then pata nahi main kinniyan ardasan ਕੀਤੀਆਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ. ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ. ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. I was so helpless. And I started to meet good people in my life. Finally. High frequency on the inside attracts high frequency people. ये अगर किसी ने कह दिया ना लोगों को जो addiction के साथ struggle कर रहे हैं, people will leave addictions more quickly. I'll say it then. There is no happy ending to addictions. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ. ਹਿੰਮਤ ਮੰਗ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠੋਗੇ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ. There might be slip-ups, you know. Family support is really important. Don't shun. Don't reject the people that are already rejecting themselves. Yeah.
you know, then you just start a new life. Mm. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ. I started to love solitude. ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਫਿਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ. महफिल्स होती हैं अब भी लाइफ में Yeah. with creative With the, like journals and like writing okay. dreams and got it. Nice. I met a group of beautiful fans like a month ago. We got tattoos together. Oh wow. Gulab de tattoos aapa karaye ne. Then we held hands and we prayed together and then we wrote in our notebooks together. I mean, it's super nerdy, but it's like the best. Oh, nice. Isn't it pretty? Yeah, it's great. I was going to compliment your tattoo. Yeah. I knew there's a story behind it. My fans call me Gulabi Queen. Ah. So Gulab. Ah. उन्होंने क्यों करवाया? I don't know. मतलब commitment देखो. और बहुत सारे लोग कराएंगे ये वाला टैटू. Yeah. ये जो अपने हाई फ्रीक्वेंसी चीज़ों की बात करी, मैं मानता हूँ कि बेसिकली ऑन सम लेवल कोई भी चीज़ जो आपके दिमागी हालत को बदल रही है, समथिंग दैट्स चेंजिंग योर कॉन्शियसनेस, इट्स ऑब्वियसली टेकिंग यू टू अनदर फ्रीक्वेंसी एंड इट्स यूजुअली नॉट अ हाई फ्रीक्वेंसी. You know, like लोग हमेशा people might say something like ayahuasca, mushroom, वो बहुत once in a while, once in a lifetime चीज़ें होती है. If you abuse that, even that becomes a low frequency activity. Anything that you look forward to on a timely basis कि हाँ हर weekend ये होगा या हर तीसरे दिन होगा, I think that's a low frequency activity. But the only way to truly understand that is when you leave it. आप एक्चुअली नोटिस करते हो कि आपका दिमाग और ज़्यादा शार्प हो जाता है, सिचुएशंस बदलने लगते हैं. आई ऑल्सो फील कि स्पेशली आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स के लिए जब आप अपने जीवन को साफ कर दे तो आपका बिजनेस या आपका आर्ट भी पूरी तरह से साफ हो जाता है एंड यू ग्रो. डिड यू सी दिस हैपन आफ्टर योर फेज 2022 to 2026? It must have been something for you. Massive. I agree with you. When I got rid of the toxins in my life, you know, I felt like I got another chance at life. मुझे लगा, okay, अब शुरू करते हैं. A new story, you know. I started to write better songs. I started to understand people's energy more. I started to protect myself more. मतलब एक टाइम होता था इतने लोग होते थे मेरे आसपास, अब एक या दो. The ones I've known for so long, you know. And अब अभी कहाँ, बॉम्बे में हो? yeah, I live here. Okay. Yeah. Huh, I live here. I love living here. I can see the ocean from where I live. Yeah. आप पंजाब जाते रहते हो पर? Yes, I was just there like last week. I go like once a month. Okay. Because family, nanke, dadke, you know? Yeah. कभी वहाँ जाकर आप सतिंदर पाजी के साथ चिल करते हो क्या? I have never chilled with him. Oh really? I've seen him like briefly at like award functions and like, you know, essay for 1 minute or 2 minutes, you know? And I've never chilled with him. What do you have to say about him as an artist? You're also an artist. I want to just hear an artist lens on Satinder Paji because जो लोग पंजाबी समझते हैं वो उनका greatness समझते हैं. But I think rest of India is still discovering great Punjabi music. Yeah. You know, rest of India has discovered yourself, Diljit Paji, Ojla. Yeah. But we need to also shed some limelight on Satinder Paji's work, Yeah. Gurdas Man's work, Yeah. all these people. So what's your lens on him? They're like the light workers, right? So poets, and they hold legacy in a way that not many people can hold legacy, you know? Gurdas Maan ji. I feel like Punjabi विरसे वास्ते Gurdas Maan ji da बहुत ज़्यादा योगदान है. Oh my God, it's so beautiful how I said it. You know, and Satinder Sartaaj, he is a true poet. I think he is so potent in his writing. Again, I love and adore his writing so much. Whenever I want to feel really simple and innocent and come back to myself, I listen to his music, you know. किते नहीं तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुला लवें, right? सज्जन राजी हो जावे ते फिर भी रौला नहीं हो पाईदा. You know, it's so good. Best Punjabi song ever. Go on. Yeah. So I love his music and I'm a fan. And the fact that like he has a song with me now, like we both have sung together in Jaye Sajjana, it had to be, it's phenomenal what it's become. It had to be something beautiful if we were to ever do a song together. And after we finished the song
And we finished the song at 4 a.m. the day it was released, right? Oh wow. Right? Out of nowhere. Matlab sari album ready hai, and then boom, God's plan, right? And I sent him a voice note. I said, I sang our song on stage for the first time today, the video that we were talking about earlier. And I said that you've made it a true prayer. I put my experience into it. I put my feelings into it. And when you sing, it feels like we're all praying. And he loved it. He loved my voice notes. And I love his music. I love his writing. I'm gonna ask you a very random question that's flashing in my head, okay? Is my hair looking okay? The random yeah. questions I want to ask. No, it's great, it's Chal, great. theek hai yaar. Don't mind us like going to all these different random places. From one ADHD to the other, I am not minding anything. Okay. मेरे सारे emotions में I won't say मार चुका हूँ, पर बहुत flatten out हो गए. मेरे को दुख भी नहीं feel होता, खुशी भी नहीं feel होती, and I love that. बहुत still हूँ. Like a lake without any waves. Just like a lake. Yeah, like with their tongue hanging out. I love it. यानी कि कुछ लेक्स में ये होता है. हाँ. मैं हाल ही में उदयपुर में था. हाँ. और हमारा बहुत बढ़िया एक होटल रूम था. We were actually shooting with the महाराणा. तो उनके ही पैलेस में हम रह रहे थे. In one of his hotel rooms, Shiv Niwas. And we were just sitting in the room with a big window and looking at the lake. And I was like, I love water so much. But वो लेक भी ना ऐसे उसमें waves थे. I feel I have become the lake which is just like still. So are you a lake with waves? I'm an ocean. When you're describing a lake, I'm an ocean on a full moon. Like मेरी ocean waves are all the way up touching the moon right now. मतलब मेरे इमोशन बड़े volatile हैं. कुछ भी कभी भी हो सकता है. हाँ. But फिर आप इतनी ज़्यादा पूजा पाठ कैसे कर लेते हो? So that is me in the morning. And maybe at the night. बाकी सारा दिन मेरा भरोसा ना किया जाए. मतलब I can be very blissful in the morning because I'm alone. I can be very blissful in the evening when when the sunset has happened and stuff. When I'm praying, it's different. अंदर से आपकी एज क्या है? अंदर से 5-year-old. 5-year-old. Yeah. Okay. That's why the ocean, wave, artist is alive, all that. Yeah. I lost the 5-year-old for 5 years or so, right? And then I found it, I love having fun. I love loving. I want to just go here. I want to go there. I want to do so much. And I just want to, if somebody needs help, like I want to help, And that's me without any filters, But इंसानों के लिए ज़्यादा प्यार फील होता है या भगवान के लिए? Oh, ये तो बड़ा beautiful question है. Who do I love more, God or humans? I love humans more. हैं? चल. मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ. हाँ. बहुत प्यार करता हूँ उनसे. But on some level ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल चीज़ है भगवान. तो मैं समझ भी नहीं पाता कि मैं किस चीज़ से प्यार कर रहा हूँ. और इंसानों के लिए मुझे बहुत प्राइमल लव फील होता. जो मेरे करीबी दोस्त हैं, फैमिली है, loved ones. I can not just take one bullet, but ऐसे पूरी मशीन गन के सामने खड़े रहकर ये वाली बुलेट्स ले सकता हूँ. Full filmy scene. I love it. I feel कि आप भी ऐसे ही हो. Yeah. आप वो मशीन गन वाले बुलेट्स ले लोगे. Yeah. Blessing and curse of being Punjabi also. Sachi. I had to really control that. Like through my 20s, I learned to not open up my heart fully to anyone. And I'm waiting to get married so that I can again. Like I've just held all that back. I don't know if you also feel that. Yeah, I mean, people might think I'm really good friends with them, but I can talk to a wall. So don't trust my love because I am love. मतलब मैं किसी को भी प्यार कर सकती हूँ. I can love a stray dog. I can love a tree. I can love a wall. So that doesn't say anything about you. That says everything about me. लोगों को लगता होगा शायद मैं बहुत open हूँ. But नहीं. दुनिया में कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ आपको जगह देख के ऐसा लगा कि यही जगह प्यार है? Oh, when I hear my family laughing, when my family is together and I hear their laughter, it makes me feel so rich.
वो प्यार है. When I जब मैं वृंदावन गई थी मुझे बहुत अच्छा लगा. प्यार, मैजिक, फ्रीडम, लाइट, प्यार. वृंदावन के बारे में सोच रहा हूँ और Yeah, फैमिली के बारे में भी. yeah. I was in the streets of Vrindavan just now and, you know, feeling so happy. क्या है मतलब जैसे गलियां सारी होती हैं वैसे वो गलियां हैं बट और मुझे तो पता भी नहीं था वृंदावन एग्जिस्ट करता है मैप में इंडिया के कहाँ है. राइट. एंड इट्स अगर ऐसा फील हो जाए तो मतलब बाकी चीज़ों में मन नहीं लगता ना. इसीलिए हर चीज़ परफॉर्मेंस लगती है. कुछ कम परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस. उफ, बहुत डीप चीज़ कह दी. उफ, अच्छा क्या लगा था वृंदावन में? I felt really little and I felt really supported and guided and loved. I felt really free. And I don't know what it is. Do you know what it is? Radha Rani's energy all over. That's what I felt. मतलब कुछ कुछ जगहें होती है इंडिया में. वाराणसी भी ऐसी एक जगह है, वृंदावन ऐसी एक जगह है जहाँ आपको एटमॉस्फेयर में ना एक थिकनेस फील होता है. ए लॉट ऑफ एनर्जी क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ साथ में मिलकर साधना कर रहे हैं. समथिंग इन द अदर होल सिटी इज़ अ मेडिटेशन रूम. Yeah. ऐसा ही है. Radha Rani has held my hand and I am so supported. I am so guided. I am filled with love. I'm the luckiest. I feel the luckiest to be guided and protected and led by Radha Rani. I pray that I speak with honesty. I pray that I lead with love. I pray कि मैं तो गलती ना हो जाए. I pray that मैं तो गलती ना हो जेड़ी तो राधा रानी ਨੂੰ बुरा लगे. और ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ. है तो हम छोटे छोटे बच्चे ही यार. क्या है बड़े होने की एक्टिंग ही तो कर रहे हैं. If only the world remembers that again. I echo the same thought. I think artists have the privilege of being children forever, though. You know, we get to be kids forever. You're such a shant lake. I was just like crying and you're just like No, I respect the raw emotion, honestly. I'm full of respect, right? You know, there's like a little sign that's coming out of the lake going respect. I love that. I love that. कुछ experience हुआ था वृंदावन में. Premanandji Maharaj said, say Radha. And when I said Radha, he said, इतना ही काफी है तुम्हारे उद्धार के लिए. And those words are tattooed in my brain. And I hold on to that like a trophy. I hold on to that as a torch, as a light. And I hold on to that line as protection and guidance. Matlab, I felt really seen that day, you know. And isn't that what we want, is to be seen and witnessed, you know, as people, artists or not, you know. कोई तो हमें देखे, कोई तो हमें कहे हम अच्छे हैं, कोई तो प्यार करे. So इसीलिए when I so जो हमें चाहिए होता है फिर हम सबको देते हैं. क्या कोट क्या जो चीज़ें हमें नहीं मिलती वो दूसरों को देखकर हमें भी फील होती कि हमें मिल गई. It's beautiful, which is why I want to be a mom so bad. Oof.
उफ, ताकि एक प्यार की मिसाइल कहीं तो गिरे. सच्ची बहुत प्यार करूंगी. Same. मैं फादरहुड के बारे में यही सोचता हूँ. Can't wait to have a full shift in priorities. You know, मेरे को करियर प्रायोरिटाइज ही नहीं करना. हाँ. इतने सालों के लिए करियर प्रायोरिटाइज कर रहा है. It's time to prioritize another human being. Yeah. Do you want a son or a daughter or both? दिल से डॉटर चाहिए, but I'm okay with anything. I want a son and I want a daughter. Both. I have to have them both. क्यों? मुझे, I mean, double the love. Like, I mean, I need to have a daughter. Oh, for sure. It is my biggest dream to have a daughter. A little me that looks and acts just like me, but I need to have a son too. Why? I think I would be a great boy mom. Add a lot of toughness. Yeah. I think I would guide my children well. I would nurture them. I hope I'll be tough. I hope I'm not all softy, but I hope that I can guide them and teach them everything I know and let them build their own lives, I agree. अब बहुत अच्छे इंसान हो. Like a very pure-hearted person. हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, मेरे को थोड़ी भी टायर्डनेस नहीं फील हो रही, मेरे को थोड़ी भी बोर्डम नहीं फील हो रही. Like it's coming out of a place of purity, this episode. I try to be kind, even though the world is not always kind, I try to be empathetic and I try to be compassionate and try to choose love. If you don't mind me asking, पूरे ज़िंदगी में सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस क्या रहा आपके लिए? I think losing my dad was really, really difficult. I remember Yaar Na Mile was one of the biggest hits in the world at the time, and I had lost my dad, and I didn't know what to think or feel, and I was like, well, and I think my whole family fell apart. My siblings and my mother, I think we could never find an anchor again. मेरे पापा थोड़े silent type सीगे, more into his books and used to work a lot and a good righteous man, providing food, shelter and security for the family, matlab the basic things that you would imagine father and husband to take care of. ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰ ਗਏ. And we still trying to gather the pieces. 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. Of course I miss him because I want to celebrate with him, celebrate moments of success, And I want to tell him, Papa, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੌਬੀ ਰੱਖ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, it's a full-blown career. I'm doing pretty well. You're doing phenomenal. So the only place I talk to him is in my dreams now. Mostly he talks to me. I don't talk to him. But that was really, really difficult. Losing BB was also really hard because so losing loved ones is always so hard, isn't it? And you can never be ready for it. You can never prepare for something like that. That was really hard. I think a couple of my rock bottoms, I had a few, one that the world might have seen, one or two that the world might not have seen. I never lost hope, though. I never lost faith in God, though, And I always had a few angels by my side, whether it was family members or a few friends and stuff. They got me through, And ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਤੋਂ, ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ. ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ. Almost. Kab? The musical journey has been really colorful and filled with ups and downs, and ਮੈਨੂੰ success ਬਹੁਤ late ਮਿਲੀ, right? ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ, it's not for me. Maybe my parents are right. Maybe I should keep it as a hobby and sing at community shows in my small city. But ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. Life would take a sudden turn. A song would come out,
or like somebody would call me for an opportunity, or ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ hope ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ. I mean, this is how God talks to you, right? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, right? So ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ I kept going, you know? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਬੜੇ ਸਾਲ. So I started writing because of that, you know, ਕਿ ਆਪੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, you know, ਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ you have good writing, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਮੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, you know, you should get a real writer to write your songs. I was like, oh my God, Mom, don't. Because her voice, your mother's voice is always in your head. Yeah. Mothers need to know that. A mother's voice is always in the child's head. Or a father's, you know, whoever you like, you know, are more close to, like, whatever a child hears growing up, they feel like that's their reality, you know? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਈਟਰਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਾਈਟਰਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵੈਲਿਡ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਪਾਸ਼, ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਿਆ ਪਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਤਾ. I remember I was outside of a Starbucks. I was driving with my mom to get coffee. That's our routine when I go back to Cali, right? She goes, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਿਆ ਪਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ. And I wrote a song that I may never release. It was just for my own self-soothing. ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਿਆ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਗੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਜੈਸਮਿਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? Boom. Face of Indian music currently. It's a big thing. It's a big thing. I dreamt of it. Ranveer, I dreamt of it. I prayed day and night. ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 1 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਸ 1 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ. Top of the building. Yeah. Wow. ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ. बहुत लगन लगी है. You know, it's taken a lot of effort, battles, inner work, de-addiction, seeing family ups and downs, and you've reached the top of the building. दो tangents है. Of course, always. पहला tangent ये है कि जो आपके 20s का फेज़ रहा जहाँ आप बस मेहनत के साथ काम कर रहे थे, यू वर थिंकिंग ऑफ दिस टॉप ऑफ द बिल्डिंग फीलिंग, वर्सेस अब जब एक्चुअली आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक पहुँच गए हो, तो उस जर्नी में सबसे बड़ा पीस ऑफ विजडम क्या जाना आपने? Maintain grace. Maintain grace, because people that are successful can sense desperation, greed, lust, all of that very quickly. So maintain grace. Be calm, be patient. Don't jump as soon as you see an opportunity. I see a lot of younger kids doing that now, and I think it turns a lot of successful people off, because they're like, oh my God, murgi vaad ke hune chicken bana lo. You know? But nahi, maintain grace. Maintain so much grace, because the people that are at the top, they really respect grace. Wow. Desperation, greed, lust. Yeah. Wow. ये तो मतलब these are non-negotiables ना. Once somebody who's been through years and years and years of trials and trial and error, and made it somewhere good in life where the whole world is looking at them, they know. That's a filter system. Boom.
ये even read in between the lines version of this is important. ये clip rewind करके देखो. बहुत ज़रूरी life skill है ये. Basically, be poised. Be poised. And Don't be genuinely, no. internally. Internally, yes. You know, externally, of course. Like you are, like the Shant Lake that you are. Be that. Yeah. When you see great opportunities, when you see great celebrities, just be at ease. Because your energy is the truth. You think वो जो उसकी opposite energy होती है, anxious energy, वो काम में भी दिख जाती है? Huh. No? You'll make mistakes. Yeah. Yes. Lack of clarity. Yeah. Wow. First and foremost, learn to control your mind. वही game है. And prayer. And write in your journal. Mehta, I wrote in my notebook before I came here, मैं कौन हूँ? Because I need to remember like the whole, like, you know, setting an intention for the evening. I was like, मैं प्यार हाँ, मैं एक desire हाँ, मैं grace हाँ, मैं passion हाँ, मैं obsession हाँ. मतलब इसी के आसपास रहना है, आज भी और जिंदगी में भी. सो खुद को बताओ तुम कौन हो और दुनिया का ओपिनियन खुद पे छपने ही मत दो. जब मैं करियर के शुरुआत में था तो मैं एक यूट्यूबर की बातें सुनता था. उनका नाम था एलियट हल्स. वो हमेशा एक राइटर को कोट करते थे. वो राइटर का नाम था रैल्फ वॉल्डो एमर्सन. तो एमर्सन की सबसे फेमस कहावत ये है कि थ्रू आउट योर लाइफ पीपल विल ट्राई प्लेसिंग यू इन अ बॉक्स एंड इट्स योर जॉब टू नॉट बी प्लेस्ड इन दैट बॉक्स. एट एज 21-22 मैं समझा भी नहीं है क्या है. अब एट एज 32 आई टोटली गेट इट. दुनिया हमेशा लेबल चिपकाती रहेगी. आप ये हो, आप वो. आपको बस ऑथेंटिक रहना है खुद के लिए, खुद के लव्ड वंस के लिए. जस्ट बी योरसेल्फ. ऑथेंटिक डिस्क्राइब करो. एक तो ये टास्क हो गया जिंदगी का. जो काम करने में आपको मज़ा आ रहा है वो काम ज़्यादा करो. ऑथेंटिसिटी खुद आ जाएगी. जस्ट एन्जॉय योर वर्क. आई थिंक दैट एन्जॉयमेंट फैक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट. बट थोड़ी मिड स्टेज ऑफ करियर में, बिगनिंग में आपको टेक्निकली अच्छा करना बनना पड़ेगा. या टेक्निक फंडामेंटल्स उन सब पे काम करना. हाँ. मिडिल स्टेज पे एन्जॉय करो क्योंकि वो एन्जॉयमेंट की वजह से ना आपके काम में एक रस, नेक्टर आ जाता है. हाँ. दैट्स व्हाट आई फील. I agree with you. I think your joy is the sign. Like it tells you where to go. Follow the joy. Yes. है ना? Yes. अभी दूसरा टैंजेंट. ये आखिरी टैंजेंट है क्योंकि मेरे को तीसरा टैंजेंट भी मिल गया. Of course. Which is the ding dong end of the podcast Okay. bell. बट उससे पहले दूसरा टैंजेंट. ठीक है. आपने खुद, जिन पर मैं थोड़ी बहुत रीडिंग कर रहा हूँ, बट आई वुड लव फॉर यू टू एक्सप्लेन मोर टू मी एंड ऑडियंसेस, क्योंकि ये बहुत लेजेंडरी फिगर है पंजाब के आर्टिस्ट के वर्ल्ड में. शिव कुमार बटालवी. नॉन पंजाबीज के लिए समझाइए ये कौन है और ये इतने इम्पॉर्टेंट फिगर क्यों है. Unfortunately, we lost him too early. Honestly, हमने थोड़ा बहुत रीड किया है. What pains and trauma and experiences he might have endured. Every Punjabi in the world has a very loving space for Shiv Kumar Batalvi in their hearts. My mother is who I heard about him from. And literally, I was in the studio last week and he has a poetry that says, Ki puchde ho hal fakiran da. And when I was in a tough space in my life in 2020, I wrote a song that I recorded last week. How coincidental that you mentioned. I said कि मंजिलां ते जाके दसांगे सफरां च की होया वे की पुछदे हो हाल साडा. So inspired deeply from Shiv Kumar Batalvi, how he expressed pain and the truthfulness in his experiences, and he spoke about love, and I mean there was a restlessness. There's only one interview of him on YouTube,
क्योंकि मेरे ख्याल से उनका बहुत सारा काम जलाया गया था बिकॉज ऑफ जेलसी. There was a lot of jealousy in his era. मेरे ख्याल से 70s 80s की बात है ये. बट लोग चमकीला का नाम जानते हैं अब, स्पेशली उस फिल्म की वजह से रेस्ट ऑफ इंडिया हैज लर्नड. बट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड शिव कुमार बटालवी एंड वीड लव टू सी अ फिल्म अबाउट शिव कुमार बटालवी. Oh my God. How can we make that a happy ending? You know, some imagination, mostly reality, you know. And I mean, a happy ending is that we're speaking about him today. Yeah, You know, he has inspired all poets of Punjab. I mean, not one poet can say that, you know, he has not been deeply inspired or impacted by the legacy of, you know, Shiv Kumar Batalvi and his words and his thoughts and his honesty. And lots of pain, actually, you know, but बड़ा जिगरा चाहिदा अपने दिल दी गल करन वास्ते ना. बड़ी करेज चाहिदी है, नहीं ते मिठियां मिठियां गल्लां ते सारे कर लेंदे ने. Are you feeling light? I feel great. Yeah. This was one of the most raw conversations I've ever done. You know, unplanned. I was just going on any tangent I was feeling. मैंने जो भी नोट्स लिखे थे मैंने उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं की यार. किस टॉपिक के बारे में I बात was like, करनी okay, I'm gonna go on the podcast. I'm gonna sound smart. I'm gonna sound intelligent. I'm gonna sound very, very like calm, like a lake. है? But instead, I was as I always am. हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज एंजल से बात हो गई. You know, just positive energy. I don't know exactly what you've been in the past, but at this stage, अभी बहुत एंजल वाली एनर्जी है. You know, full of love, full of like blessings. That's so beautiful. I love that. Seriously, but on some level, you're also blessing yourself with everything you're saying. आप खुद के लिए manifest कर रहे हो चीज़ें. Yeah. But you know, I know somewhere on the inside, just your presence has been like a dua for our studio, our show. So all I want to say is, from the whole team, thank you for just gracing the space. ये space आप जैसे लोगों के लिए ही बना. तो thank you. That's all I have to say. And बाकी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, I don't have words to describe. But today again was one of those days where I didn't feel like I've worked. मेरे को बस एक आर्टिस्ट के दिल को जानना था. And I'm very glad I got to do that with you. Which is why I was being like a lake. तो मैं बस आपको जानने की कोशिश कर रहा था. You know? I'm so thankful to be here. I was really, really excited that we were going to finally do this. एक दिन तो ये होना ही था. हाँ जी. और आज वो दिन है. And मुझे बड़ा अच्छा लगा. I felt like I was able to express all my personalities today. And we spoke about things that made me feel really happy. You know, things that matter the most, right? Music तो शायद 5 मिनट ही बात की है. But music शुरू कहाँ से हुआ था, like बचपन and मम्मी पापा and राधा रानी and I learned that my riyaz was my life experiences and the shabads that I sang at the Gurdwara. You know, I never thought of it like that. And I feel happy and I feel thankful. I feel like I have less to hide, even less to hide now. You know, because एक बार emotions बाहर आ जाए फिर तो ये हमेशा पे रहेगा, हमेशा से रहे. कितना कहते हैं हमेशा रहेगा इंटरनेट पे. That's a good thing. Yeah. That's a good thing. Your children should see what their mama did to reach where she reached. Yeah. एक प्रोफेशनल लेवल पर एक चीज़ कहना चाहूँगा. आई जेन्यूनली फील कि अब बिल्डिंग के टॉप पर पहुँचने के बाद ना राधा रानी आप पे एक वो जेट पैक डाल रही है, अभी आप बिल्डिंग के ऊपर भी जाओगे. तो जस्ट विश यू इवन मोर सक्सेस, इवन मोर मैनिफेस्टेशन एनर्जी. तो जो भी आपको चाहिए, आई एम श्योर यू विल एंड अप क्रिएटिंग. Thank you, Ranveer. प्लेजर. और बहुत कुछ कहना आपको वैसे. आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग टू आर्टिकुलेट राइट नाउ, बट आई नो यू सेंस द ग्रैटिट्यूड. Yes. So that's all that matters. I'm so happy and I'm so thankful. And thank you for this very, very beautiful, vast space where I could just say whatever I want. And everybody is so kind here and so, they're like silent lakes as well. They're just calm. And it's so beautiful to be a positive, invisible energy because that becomes
the silent positive energy of the room, है ना? And setting the intention in the beginning was really, really a beautiful thing. Yeah, lots of people are going to take inspiration and healing from this. So thank you, Jasmine. Hope to meet you again. Want to talk to you when you're on the moon next. Done. Okay. Thank Thank you. Means a lot. एक रिचुअल है हमारा शो से पहले कि एक इंटेंशन सेटिंग रखते हैं हम. तो मैंने बहुत सोचा आज के बारे में, और मेरे लिए एक माता जी का दिन रहता है आज, तो मैं फास्ट करता हूँ और एक बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए. आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे करेंगे, बट कुछ हीलिंग पास ऑन होगी इस एपिसोड के थ्रू. वो मेरी मेन इंटेंशन है. तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रहेगी, कुछ कुछ डार्कनेस के एलिमेंट्स निकल के आएंगे फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव प्लेस. तो मेरी इंटेंशन बस यही है कि बहुत सारी हीलिंग पैक इन करके ऑडियंस के लिए पेश करना. तो आप अगर डिसएग्री करते हो या कुछ ऐड करना, आप बस कह दो. I mean, that's really beautiful, to have a platform so powerful and use it for healing and empowering is superior to anything else, कुछ ऐड करना चाहोगे? I'd like to be very open today. That's my intention. I'd love to speak about the things that I've experienced in a lighter manner, but very truthfully. Not to indulge in anything too much that's happened in the past, but speak about the future, what I've learned. Nice. I think that's a Same.